यंग साइंस एंथुजियास्ट्स के लिए। और इसी सीरीज में हम हर हफ्ते हर महीने एक एक्सपर्ट से रूबरू होते हैं, और एंड वेर वी गेट get to know about the new avenues and the new interactions in the field of science and technology. In this special series, in this special lecture 8, we have with us Dr. Aleksandra Ardaseva. She is presently a theoretical physicist at the Niels Bohr Institute at University of Copenhagen. इन्होंने पीएचडी की है मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड से, और इनका डॉक्टरल वर्क था studying evolutionary adaptation of cancer cells in dynamic environments using analytical and numerical techniques. इसके साथ ही वे एक्टिव मैटर ग्रुप्स के साथ भी जुड़ी है, और उनका ये शोध जो है उसी के आयाम के बारे में वो डिस्कस करने आज वाली है. सो टुडेज टॉपिक इज बायोलॉजी थ्रू द लेंस ऑफ इक्वेशंस एंड मॉडल. ओवर टू यू अलेक्जेंड्रा. Hello, everyone. Thank you very much for giving me the opportunity to talk to you today and share with you the research I'm doing. I am an interdisciplinary scientist, meaning that I don't work on one subject, but I try to understand several subjects at the same time. So today you're going to hear about biology, you're going to hear a bit about mathematics, also a bit about physics. So I hope you'll be able to follow me and ask questions if something is unfamiliar. So as an interdisciplinary scientist, how did I arrive there? My academic journey wasn't really linear. I jumped from one field to another as I studied. So I began my education in physics, and particularly in astrophysics. So my focus was looking at the things that are very, very big and very far away. But then as I was studying and trying different projects and classes, I realized I do not enjoy working in observatory. I'm not really good, or I do not enjoy as much working with data, with big data. What I enjoy was to do modeling, so using equations to understand phenomena. And at the same time, I got interested in healthcare and in more medical field due to my mother. She's an oncology nurse. And I found out I could do my research, do study modeling, but in the context of biology. So I pursued my doctoral studies in mathematical biology. And after that, so I moved from physics to maths. And then I moved again back to physics to study how small organisms such as cells or bacteria, how do they move collectively. So throughout my academic journey, I moved from looking at something very big to something very, very small. And shall I continue, or you want to translate now? Yeah, base. So, yep. So, डॉक्टर अलेक्जेंड्रा ने अपना एक बेसिक इंट्रो दिया है और अपने बारे में ये बताया है कि कैसे उनका जो ट्रांजिशन है एस्ट्रोफिजिक्स से बायोलॉजी की तरफ हुआ, और उनका ये इंटरेस्ट बढ़ता गया जब उन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ा. मेजॉरिटी जहाँ पर फिजिक्स के बारे में चर्चा होगी उसके बारे में पढ़ा होगी, लार्ज डेटा होता है, लेकिन उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे डेटा एनालिसिस से ज़्यादा मॉडलिंग पे रहा. और वो मॉडलिंग को लेकर ऊपर से उनकी जो मदर, जो खुद एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर स्पेशलिस्ट है, उनकी वजह से शी गॉट इनटू इंटरेस्ट इनटू मैथमेटिकल बायोलॉजी में इंटरेस्ट. तो इसीलिए उन्होंने डॉक्टरेट जो है अपना मैथमेटिकल बायोलॉजी में किया, और फिर वो पोस्ट डॉक के लिए, उसके बाद के जो शोध के लिए सॉफ्ट मैटर फिजिक्स में गई, जहाँ पर वो बायोलॉजिकल जो मोबिलिटी है
किस तरह से वर्क करती है उस बारे में वह शोध कर रही है। So just to give you an idea what kind of questions I was answering through my academic journey. So first I started as an astrophysicist, and the question that I was looking at was what happens to lightning on other planets? So planets that are outside of solar system, which are many of them, they're very different. They're called exoplanets since they're outside of solar system, and we wanted to investigate what do they do to the atmospheres of these planets? What kind of chemistry they trigger? Because lightning is essentially a shock wave. You get very hot, very dense plasma that propagates, and during this you get some chemical reactions. And by looking and noting what chemicals are present in the atmosphere, we potentially can prove that lightnings happen on other planets. So this was the first question I answered using modeling. During my PhD, the question was completely different, was trying to understand why it is so difficult to treat cancer. So looking at the disease, and I'm gonna explain you more in detail a bit later about this question. And finally, in my current research, my main interest is how cells interact with their environment, because in our bodies, they exist, but they are surrounded by other tissue, they're surrounded by blood vessels, they exchange some chemicals, some molecules between them. So I want to understand how this interaction happens. And in order to answer all of these questions, I'm using mathematical modeling. So different questions, but same methods. And so in order to give you some description about what a mathematical model is essentially a representation of some real-world system that we use mathematical equations and concepts to study. And essentially, you can write a set of equations that would describe something, and some equations are simple enough to solve them with a pen and paper, so we call it analysis. But some equations, some sets of equations and some problems are more complicated, and we can not solve them easily. We have to solve them numerically using computer, so programming the equations using some numerical methods, which they're different, available depending on your problem and complexity. So you can operate with these two methods and essentially simplify the real world problem, understand it, study it, test it, and then make some predictions. And there are different types of models that can be used depending on your problem, and I'll give you two examples. First is deterministic models. So simplest example would be apple falling from the tree. So these are Newton's laws of motion. We know the mass of the apple, we know the height of the apple, so we can estimate and know exactly the time it takes for apple to hit the ground. So every time you do this calculation, you get all the time the same answer because it is a physics law, it is deterministic. However, other types of models can be more prone to stochastic events, so they're probabilistic. So you have some probabilities of events occurring, and then you calculate probable outcome. An example of this would be weather forecasts, because they're usually based on some probabilities that scientists calculate and then make their prediction. And we can, I don't know if you want to maybe stop here. Okay, we could have like finished, but stick. Okay. Okay. So, मैडम अलेक्जेंड्रा ने हमें ये बताया कि किसी भी मैडम का जो जर्नी है
उसमें सबसे शुरुआत में जो मॉडलिंग का उनका जो बेसिक इंटरेस्ट है उसको उन्होंने कैसे यूटिलाइज किया। तो जैसे जब वो फिजिक्स में थी और फिजिक्स के दायरे में रहते हुए उन्होंने ये दिखा कि सोलर सिस्टम जो है हमारा, उसके बाहर के जो प्लैनेट्स है, तो वहां पर लाइटिंग यानी बिजली का जो कड़कना है या उन उन प्लैनेट्स पर उसका क्या वो किस तरह की होती है। तो मैडम जो मॉडलिंग का जो कंसेप्ट है उनका, उसके माध्यम से उन्होंने ढूंढ के निकाला। उसमें इन्वॉल्व कोई केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके बदौलत वो मॉडल हम विकसित कर पाते हैं और हम देख पाते हैं कि उन प्लैनेट्स पर भी लाइटनिंग इस तरह की दिख पाती है। दूसरा उनका इंटरेस्ट जो है वो मॉडलिंग को ही लेकर कि कैंसर को वो किस तरह देखती है और कैंसर को ट्रीट करने में हम किस हद तक आगे हैं या किस हद तक हमको डिफिकल्टी हो रही है, उस बारे में ये सेकंड क्वेश्चन अराइज हुआ है उनके मन में, जो कि उनकी एक पर्सनल भी इच्छा थी। तो उस बारे में हम आगे भी बात करेंगे। और तीसरा जो सवाल था कि जो सेल्स होते हैं, जब से जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है अपनी जीवाणु का या हमारा, तो वो अपने एनवायरनमेंट से, अपने सराउंडिंग से किस तरह इंटरेक्ट करता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा सवाल रहा है। तो इन सब को मैम मैथमेटिकल मॉडलिंग के माध्यम से, जो गणितज्ञ मॉडलिंग से सॉल्व करने की कोशिश करती है, और उसके माध्यम से हम देखते हैं कि कोई आंसर्स हमको मिल पाते हैं कि नहीं। तो जिस तरह बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है कि एक रियल वर्ल्ड का जो सिस्टम होता है, अपना अपने इर्द गिर्द की दुनिया है, उसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और इक्वेशन के माध्यम से हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है या जो भी हमने देखी दुनिया होती है, उसके कुछ उसको कुछ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में या इक्वेशन में हमने उसको ढालना होता है। कुछ कुछ सिंपल होते हैं और कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल हम जल्दी हम उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, उनका उनका मॉडल जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। उसको हम कंप्यूटर के माध्यम से या बड़े प्रोग्राम्स के माध्यम से हम न्यूमेरिकल मेथड्स लगा के हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जैसा मैम ने बताया कि ऐसे तो बहुत किस्म के मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं। एक उसमें डिटर्मिनिस्टिक है, यानी जो निश्चयात्मक, जिसको हम बोलते हैं कि हमको पता है कि पेड़ से जब एप्पल गिरता है तो उसकी घनता, उसका मास और उसकी जो वेलोसिटी या फिर जो ग्रेविटी लगती है, उसके बेस पर से हम उसका मास निकाल पाते हैं या उसकी हम स्पीड निकाल पाते हैं। या हमको मैं इसमें बेसिकली ये है कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरी एक मॉडल होती है, प्रोबेबिलिस्टिक होती है, यानी हम कयास लगाते हैं। ये कयास लगाने वाली जो स्थितियां हैं, जो हम पैटर्न्स के ऊपर या एक किसी ट्रेंड के ऊपर में बेस करते हैं। ऐसे और भी मॉडल्स होते हैं। तो यस मैम, आफ्टर दिस, यस मैम। So then I showed you several types of mathematical models. There are more of them, of course, different ways of formulating mathematically the problem. But there are also lots of problems that you can apply to them. So on top of the ones I discussed in the beginning, that were part of my career, scientists and researchers and also engineers, they applied modeling to various problems. For example, to understand how objects move. You can model the movement of planets or stars or any objects that you want to quite precisely. Modeling is also a big part when you want to study and preserve ecosystems. For example, how we can make sure populations do not go extinct when they're perturbed. For example, how we can make sure there's still fish in the ocean when humans do a lot of fishing. And in order to do this, lots of mathematical modeling is used to limit fishing or hunting, for example.
mathematical modeling is also a big part of economics and making a lot of like predictions, what will happen in the stock markets and so on. When engineers design new machineries, for example, airplanes, there are lots of modeling goes of modeling fluids and engines, modeling new materials to make sure that airplanes are safe and they can withhold all the stresses they endure during the flight. Also, when developing drugs, in order to understand which molecular compounds can be used, there are ways to model this and also to understand how these compounds will interact with the human bodies. For example, how much it takes for our body to clear out the drug. So in order to evaluate the toxicity of it, and of course, in any construction work, in order to make sure it will be strong and the bridges will not collapse, there are also mathematical modeling involved. So I will now want to guide you in how do we make a mathematical model? How do we construct it? And we first need to identify the problem or the question or a hypothesis that we want to solve. Once this is identified, we will have to make a list of assumptions. Real world is very complicated and we cannot include every single detail in our equations, otherwise we will never solve it. So we need to simplify. And in order to simplify, we need to extract key physical components or key biological components of the real world problem and list them so that we know what are the initial conditions, what are boundary conditions for the model, what kind of variables we need to include. And once we have our assumptions, we can identify the mathematical variables. So what will be varying in time or in space, how they will interact with each other. So essentially, we need to write our equations. Then we need to do the maths any way you can. Sometimes you can do it analytically, as I mentioned, sometimes numerically, sometimes both. And after that, you get some output of your models. Usually you get some data, you can plot it, and you can look and analyze the results, see any trends, patterns, and then you need to make a comparison with the original question, whether the data helped you answer your question, or quite often it happens that there is some differences between what you analyzed with your results and the real problem. So you haven't really addressed the question. So if this is the case, you need to go back and readjust your perhaps assumptions. Maybe something was missing or something was wrong that you initially planned. And maybe because you change assumptions, you will need to adjust your equations, and then you repeat the cycle. And sometimes you are in the loop for quite a bit of time, and it can be a bit frustrating of going back and forth in tuning and yeah, all of this loop can be a bit tiring. But at the end of the day, you will get usually what you want. You would get your results, and you will be able to prove a theory or do some predictions for further experiments or for real-world applications. And I want also to stress one thing, that models are not necessarily theoretical or only computational. Models can be experimental. And since I'm interested in biology and I work with biologists, they also have their own models. And just a few examples would be cell lines. So these are cultures of cells that they often use, they're standardized, that they have extracted either from an animal or from a human with a disease, like cancer cells. Cancer cell lines, they modify them a bit genetically, that the cells can proliferate indefinitely, so that you can look
at lots of generations of cells. You can put them on a petri dish, so look at the layers of cells, how they behave. You can put them as spheroids, so grow them three-dimensional cell structures. And you can test drugs, different mechanical stressors, or put different chemicals onto it and see how they behave. And this will give us information for design of drugs or motivating the mathematical modeling, and so on. These are very powerful ways and very common ways to study biology. And another way is because the cell lines, they're usually looked at in a petri dish, so lab environment, and it's not far away from the real world. In our body, we have immune system, we have vasculature. It's a big organism, and you cannot replicate it in a petri dish. So what scientists do is they insert these cell lines into other animals, often mice, so that tumor as a whole grows and it's closer to the real environment that happens in humans, so we can study more complicated but more realistic scenarios in the models. यस। सो मॉडल्स के धरती पर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मैडम ने सबसे पहले बताया कि मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग कहाँ कहाँ पर काम आती है और कहाँ कहाँ बहुत एसेंशियल है, और हमने उसके प्रमाण भी देखे हैं। जैसे ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव होते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में मूव हो रहे हैं, हमारे पंछी जो है वो मूव हो रहे हैं एक अपने एक ग्रुप में मूव। वैसे इकोसिस्टम्स जो है, हमारे इर्द गिर्द का जो इकोसिस्टम है उसको अच्छा रखने के लिए, जैसे मछली है उसकी तादाद प्रॉपर रहे, इसके लिए कंजर्व करने के लिए कुछ मॉडल्स डेवलप। इसके साथ साथ कोई अ, जीवाणु है या इवन हम इंसान भी है, इनको अगर इनकी पॉपुलेशन के लिए या इनको प्रॉपर संगोपन हो, इसलिए एक प्रॉपर मॉडल हम डेवलप कर सकते। इकोनॉमिक्स में हमने देखा है मैथमेटिकल मॉडल्स काम आते हैं। आप शेयर मार्केट वगैरह भी देखते हैं, वहाँ पे भी मार्केट मैथमेटिकल मॉडल्स ही काम आते हैं। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में यहाँ मॉडल्स काम आते हैं। ड्रग डेवलपमेंट में, औषधि शास्त्र में, मेडिसिन में मैथमेटिकल मॉडल काम आते हैं। कंस्ट्रक्शन के बड़े जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है उस क्षेत्र में भी मैथमेटिकल मॉडल काम आते हैं। तो इसको मैडम ने बहुत संक्षिप्त में समझाया कि सबसे पहले हमको कोई भी मॉडल डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, एक प्रोसेस होता है। उसमें है कि हमारी जो रियल वर्ल्ड है वहां पर जो प्रॉब्लम एरिया है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करें। दूसरा है उसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें कि हमारे एजम्पशंस क्या है इसको लेकर, इस प्रॉब्लम को लेकर। तीसरा है फिर इसके जो की वेरिएबल्स है उसको हम सॉर्ट करें। फिर उसको कुछ एक फॉर्मूला या मैथ्स का प्रॉब्लम लगाएं जिसके बेस पर हम कुछ डेटा आउटपुट ले सकें और उसको लेकर हम रिजल्ट एनालाइज करें। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में कंटिन्यूअल आप काम कर रहे होते हैं, मैथमेटिकल मॉडल भी आपका तैयार हो रहा होता है, क्योंकि हम ट्राई एरर करते जाते हैं और हम मैथ अपना बेटर करते जाते हैं। तो इसके बाद जो हमको रिजल्ट्स मिलते हैं वो जरूरी नहीं कि एकदम आपके क्वेश्चन या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपने ये बार बार कंपेयर करते रहना ही होगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है या उस दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर वो उस तरह नहीं होता है तो हमको फिर से वो प्रोसेस कंटिन्यू करनी होती है, अजम्पशंस यानी सिंप्लीफाई करनी होती है नए किस्म की अजम्पशन लेकर, और अगर कुछ और वेरिएबल्स है उसके वो आइडेंटिफाई करके उनको मैथ्स में डाल के करना होता है। इसका हल बहुत निकलेगा लेकिन एक दिशा जरूर मिलती है, और एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कुछ डेटा सेट्स होते हैं जो आपके आगे के प्रोसेस के लिए, इस मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करने के लिए बहुत एसेंशियल हो जाते हैं। और इसी के साथ मैडम ने कहा कि जो बायोलॉजी की फील्ड है, बायोलॉजी की फील्ड में
जरूरी नहीं कि सारे सैद्धांतिक या कंप्यूटेशनल ही हो, यानी गणित गणित करने वाले ही मॉडल्स हो। जैसे मैंने एग्जांपल कहा कि सेल लाइंस नाम के ऐसे कल्चर्स होते हैं। कल्चर्स का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल्स या ग्रुप होता है जिसको आप जैसे हम बायोलॉजी में हमारे बैक्टीरियल कल्चर होता है, तो उसमें क्या होता है, हम उसकी जो उसको हम टेस्ट कर सकते हैं पेट्री डिश के ऊपर में। ग्लास की डिश होती है, इस पर हम पेट्री डिश पे हम उसको सेल लाइंस जो है उसको हम उस पर काम करके या उस पर कुछ हमारी, जैसे हमको कोई ड्रग्स की टेस्टिंग करनी है, तो उसको हम पेट्री डिश पे डाल के उन सेल लाइंस के माध्यम से हम देख सकते हैं कि ये किस तरह प्रोपोगेट होता है। और यही ये जो सेल लाइंस है वह एक अपनी बेसिकली एक आपके ड्रग डिस्कवरी में या आपके इंटरैक्टिव मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन में आपको एक बेसिक एक आपको मॉडल डेवलप करके देती है कि ये इस तरह का फर्क होगा जब हम इस पर ये केमिकल रिएक्शन या ये बायोलॉजिकल रिएक्शन करते हैं। अब कुछ कुछ चीजें जो है वो बड़ी होती है, वो हम पेट्री डिश पे हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही एक दूसरा मॉडल होता है जेनोग्राफ्ट्स बोलकर। तो एक स्पीशीज के डोनर से दूसरे स्पीशीज में वो प्लेस की जाती है, और उस माध्यम से ये जेनोग्राफ्ट्स का आप देख सकते हैं टेस्टिंग होता है। और इसी के बेस पर बायोलॉजिकल जिसको हम कहते हैं मॉडल्स जो है इस तरह से टेस्ट होते हैं। और इनकी जो प्रेडिक्टेबिलिटी है या इनका जो ये किस तरह से फंक्शन करेंगे आगे की तरफ, यह बहुत अच्छा हमको एनालिसिस के लिए डेटा देता है। यस मैम। So at the end of the day, my research is interdisciplinary, meaning that I work very closely with biologists who do experiments on different cells and bacteria. And it is very rewarding job because you can view different problem from a different perspective. Like physicists will approach a problem one way, whereas biologists will have different view on the problem. So when we work together, we have broader understanding and broader context of the similar problem. However, it also comes with some technical problems. For example, I'm I know a little bit of biology, but I'm far away from an expert, and I simplify things as a physicist. You can see in this picture of how physicists would see a bird, and of course biologists would see a bird differently. So it creates some problems in communication. You need to be able to explain what you are doing in a way that other person will understand. And you also need to adjust expectations because mathematical models are limited and also biological models are limited. And biologists will not know the physical limitation of mathematical model and vice versa. So it takes time to navigate the communication between the two parts. For example, I'm now going to give you a very simple example of mathematical model. And this is predator-prey dynamics equations. This is also known as Lotka-Volterra model. It was developed by scientists Lotka and Volterra. And essentially, you can imagine we want to study a population of foxes and bunnies in a forest. You can think that there are no other species there, so bunnies only can encounter a fox. So this is our problem. We want to study how what are the numbers of these two populations. So we define mathematically two variables, number of bunnies, B, and number of foxes, F. And we want to see how it changes in time. And first, let's look at number of bunnies. We can write an equation. Don't be scared by maths. You can just
look at the written words to understand what is written in an equation. So, for example, we want to look at change in the number of bunnies. We need to ask a question: what in an interval of time can happen to bunnies? Bunnies can reproduce, so they can create smaller bunnies. So this will create some positive addition to the population. And bunnies can also be eaten by foxes, so fox can hunt bunnies, so they can die because they were hunted. So this will create a negative impact on the population. So the net change in the number of bunnies will be number of bunnies born minus number of bunnies hunted. We can look in a similar way about fox dynamics. So how many in an interval of time, how many foxes there will be changed. Again, foxes can produce babies. And bunnies cannot hunt foxes, but foxes still can die from natural cause. So there'll be some negative term there as well. And this is a very simple mathematical equation system. We can actually solve it exactly and get exact solutions on a paper. And we can, doing some mathematical analysis, we can show that there are three outcomes. If foxes eat too many bunnies, so they will essentially eat too much, and at some point all bunnies will go extinct. Foxes will have no food left. So then both population will at some point decay. Second option is that foxes will die faster than they reproduce. So essentially foxes will die out, but the bunnies, there will then be no limitation. Foxes no longer hunt bunnies, so bunnies will do really well and grow in their numbers. And third option is that two populations can coexist together. So there'll be times when there'll be a bit more bunnies, so a bit more food for foxes. Foxes will consume these bunnies, so bunny population will go down, but foxes will rise because plenty of food, and they will fluctuate like this in time and essentially coexist. And this is a very nice scenario, and ecologists, there are lots of interest in the coexistence of different species because world is so diverse and there's so many different animals out there. However, the real situation is not as simple as just foxes and bunnies living in one forest. There are other animals in the forest usually, so there are other types of prey that foxes can hunt, like rodents or mice or anyone else. But there can be other types of predators that can actually endanger fox populations. Foxes can also be prone to diseases like rabies, and this is what usually controls the fox population in the nature. And we should not also forget about the environment, about the weather. Weather can be unstable, unpredictable. There can be some cataclysmic events like droughts or hurricanes happening, which can affect each population. And this is a very simple model applied to a simple problem, but we can use similar logic in order to study cancer. And I think it's a good point to translate maybe here. Yes, sorry, I got my power got off. Yes, Do you want am I to audible? translate yes No, now? Yes, Or Subodh, you Yes, are we can audible. hear you, Subodh. Yeah. yes. So, जैसा मैम ने बताया कि अभी हम बेसिकली हम देखेंगे कि एक बेसिक मैथमेटिकल मॉडल को हम देखेंगे, तो जिसको प्रेडेटर प्रे डायनामिक्स बोला जाता है, लॉटका वॉल्टेरा मॉडल जिसका नाम है। और यहाँ हम देखते हैं कि दो वेरिएबल है, एक है आपके खरगोश और दूसरे है आपके फॉक्स यानी लोमड़ी।
उसको लेकर के मैम ने बताया कि इनके नंबर में चेंजेस, यानी इनकी पॉपुलेशन में या एक जंगल में समझो ये दोनों रह रहे हैं, इनके चेंज ऑफ नंबर कैसे हम मैथमेटिकली फॉर्म करेंगे। तो उसमें दो वेरिएबल्स मिल गए हमको, बनीस यानी खरगोश और फॉक्स का एफ। तो उसमें हम देखें कि जितने खरगोश बॉर्न हो रहे हैं, छोटे बेबीज, और कितने बनीज या खरगोश को फॉक्स खा रहे हैं, उनके बीच के डिफरेंस से हमको समझेगा कि ये चेंज इन नंबर ऑफ बनीज, ये चेंज इन नंबर ऑफ खरगोश कितना है। तो वैसे ही फॉक्सेस में है। अब फॉक्स में क्या है, नए फॉक्स जन्म लेते हैं बेबीज, और कुछ जो फॉक्स है, क्योंकि उनको कोई मारता नहीं है अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखे, तो वो नेचुरल कॉज से मरेंगे। और जितना उनका जन्म होता है और जो मर रहे हैं उस बीच का डिफरेंस हम देखेंगे कि ये फॉक्सेस के चेंज ऑफ नंबर है। तो अब ये बहुत सिंपल मैम ने बताया है। इसका जो आउटकम्स है वो क्या क्या है इसी मेथड के, अगर जंगल में ये लोग रह रहे हैं। पहला आउटकम है कि अगर फॉक्सेस है, बहुत सारे बनीज या बहुत सारे खरगोश खा लेते हैं, तो अपने आप खरगोश का जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम हो जाएगा। अगर फॉक्सेस को बहुत बीमारी होती है और वो पैदावार कम कर पाते हैं, तो खरगोश ज्यादा हो जाएंगे और फॉक्सेस कम होते जाएंगे। और तीसरी आउटकम ये हो सकता है कि दोनों पॉपुलेशन जो है वो एक साथ कोएग्जिस्ट करती है। अब ये लॉटका वोल्टेरा मॉडल ये बेसिक है, लेकिन जब आप देखते हैं जंगल में और भी प्राणी होते हैं, और भी इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर्स होते हैं, जिससे ये जो मॉडल है उसको अफेक्ट हो सकता है। तो हम जो है इतना सिंपलिस्टिकली हम आगे नहीं जा सकते, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए, इसके एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हमको मॉडल विकसित करने की जरूरत है। इस Okay, so I'm gonna now show you how we can apply similar types of modeling, similar ideas to understand cancer. And cancer is extremely prevalent disease. Unfortunately, it's predicted that every third person will develop cancer in their lifetime. And it's not only because we are getting more and more cancers, it's also because we can diagnose it better and find out that people have it. There are different types of cancer, but they have all they all have similar quality, that this is a disease where cells start proliferate uncontrollably. And there are different ways to treat it, with drugs, with radiation. But unfortunately, the prognosis and whether the person will be cured or not depends on the stage of the when you get diagnosed, how far the disease has progressed. If it's at early stages, there is a big chance that person will be cured. And everything will be good. They can also operate to remove it, and sometimes it's enough. Sometimes you need to add other treatments. But with some cancers, for example, pancreas cancers, they're very aggressive and very fast, and we do not have treatments. And one of the reasons is that this disease develops drug resistance. So we give a drug, it probably works, because we can see when in patients that the tumors grow, like reduce in size or they disappear completely, and then after some year the tumor is back. And it is also a very progressive disease in the sense that it starts in one organ, but as it grows, as it develops, it can enter the bloodstream and travel across your whole body and colonize other organs. And this is called metastasis, where you get primary tumor, primary regional tumor, and then smaller tumors around the body. And we, in my and me and other scientists, we want to understand how to prevent it from developing drug resistance, from evolving to this metastatic state, which is incurable.
And in order to approach this problem, we need to understand how tumors develop and what is happening there. And tumor starts as a clump of cells which change they're modified genetically, so they can grow and grow and grow. But as they grow and the tumor gets bigger, it needs nutrients, because all cells in our body, they need oxygen in order to maintain their function and just live. But when you are a big chunk of cells, oxygen cannot penetrate throughout this big chunk because it's limited by diffusion. So cells will send signals. Please, can you grow some more blood vessels? Because blood vessels deliver oxygen and nutrients. So they will send some signals, and smaller vessels will start growing out of bigger vessels into the tumor so that cells can get some nutrients. And if in our healthy bodies, blood vasculature is organized such way that every cell receives optimal amount of nutrients. So it's very engineered system we have in our bodies, very optimized. But in tumors, it's dysregulated because there is no organization. Cancer cell will send as many signals as it wants and not care what happens to cells on the other side of the tumor. So the resulting signaling that tumor sends is very chaotic, and the vasculature is very irregular. It's weird in its shape. It's not optimized for blood flow. You can get lots of events such as occlusion of blood vessels, where there's something blocking the blood to flow. You can get blood leakages because the blood vessels do not form proper walls, so that blood can just leak out. And you can also have some hydrodynamics like flow reversals and so on. And since blood is the main source of oxygen in the tissue, any disruption to blood flow or to delivery will result in fluctuations in oxygen that cells will experience. So cells will have to adapt how they rely on oxygen, because oxygen, it's the main metabolite of the cell. It gives energy. So cells have to adapt. How do they rely on oxygen? And how do they can adapt? They can change their physical properties. And I'll give you, to make it a bit more intuitive, is that you can think about flamingos. They genetically are white, but depending on their diet, what type of fish they consume, their coloring can vary from white to pink. And similarly in tumors, even though they can be genetically identical, depending on their environment, they can exhibit very different properties. They can vary in how fast they can move. They can vary in what type of nutrients they rely on, for example, oxygen or other nutrients such as glucose, glutamine, and other molecules. So they can adjust their metabolism. They can also change how they proliferate, whether they proliferate more or proliferate less. So lots of things that they can adapt. And I don't know if it's better to translate now or I continue. Okay, I'll do it. So जैसा मैम ने कहा कि हम और डीप जाते हैं और मैम के जो इंटरेस्ट एरिया की तरफ बढ़ते हैं। हमने देखा है कि कैंसर का जो प्रमाण है वो अभी बहुत बढ़ता जा रहा है, और हमने देखा है कि मैम ने भी पहले स्लाइड्स में बताया कि किस किस्म के कैंसर से लोग ग्रसित होते हैं। और हर हर व्यक्ति या हर थर्ड व्यक्ति को ये चांस होता है कि कैंसरस उसमें सेल्स डेवलप हो, कार्सिनोमा उनको डेवलप हो। तो इसी चलते मैम ने ये बताया है कि कैसे ये फैलता है कैंसर का डिसीज। तो ये एक बेसिकली क्या होता है कि कुछ कुछ कैंसर जो है वो इस तरह के जटिल होते हैं कि एक जगह से खत्म भी होने के बाद वो दूसरी जगह से डेवलप होते हैं।
एक मतलब उनका जो प्रोग्रेसिव नेचर है, उस वजह से उसको प्रेडिक्ट करना भी हमको थोड़ा सा मुश्किल होता है और ट्रीट करना भी उसका मुश्किल होता है। दूसरा है कि जिस किस्म की उसकी क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस, मेटास्टेटिस बोलते हैं जिसको, जिसका ये है कि उसका एक जगह से दूसरी जगह पर फैलने के काबिल होना। अगर एक लंप हम निकाल गए तो वो दूसरी जगह दूसरे लंप हम तैयार हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी टास्क ही वही है हमारे लिए कि ऐसे हम विकसित हो, इस किस्म की हम ये जानकारी विकसित करें कि ये मेटास्टेटिक स्टेट हम टाल पाए, कि आगे ये प्रोग्रेस ना हो, इसकी हम श्योरिटी कर ले, या इसके लिए हम तैयार रहें। तो ट्यूमर्स के बारे में जैसे मैडम ने बताया कि ब्लड वेसल्स बेसिकली होते हैं किसी भी कैंसर सेल, जो होता है ट्यूमर में, जो कैंसर ट्यूमर होता है उसमें जो ऑक्सीजन उनको लगता है सेल्स को, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है। अब हम एक नॉर्मल कोई मसल देखें, वहां पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो एक प्रॉपर शेप में, प्रॉपर साइजेस में। लेकिन जब हम एक ट्यूमर में देखते हैं, हम एक ऐसे कैंसरस ट्यूमर में देखते हैं, तो वहाँ इरेगुलर होती है। क्यों क्यों होती है इरेगुलर? क्योंकि एक तो जो सेल्स होते हैं वो बार बार सिग्नल देते हैं कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमको ब्लड वेसल्स बना के दो, बना के दो। तो वो जिस तरह वो सिग्नल जा रहा होता है, तो अच्छी वाली जगह से वो ब्लड वेसल्स जो है वो धीरे 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 अपने अंदर की तरफ डेवलप करता जाता है। अब जो ट्यूमर का जो, या कार्सिनोमा का जो पोर्शन होता है, वहां पर जो ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे या प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं होंगे। तो चांस वहां होता है उसका वॉल जो है थोड़ा सा अनइवन होता है, उस वजह से आपको देखेंगे वहां पे ब्लीडिंग भी होती है। वो एक नॉर्मल हेल्दी ब्लड वेसल्स के कंपैरिजन में अलग होता है, और उसका शेप जो है वो बहुत अजीब होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ब्लड वेसल सबसे जरूरी है सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, सेल्स को डेवलप करने के लिए। और सबसे इसके लिए क्या है, तो सेल्स जो है वो अपनी फिजिकल स्थिति भी चेंज करते हैं, ताकि वो ये ब्लड वेसल्स को अ, ला पाए और अपनी हम अडेप्ट कर पाए। तो इसलिए क्या होता है कि एक ही ट्यूमर में अलग अलग किस्म के, जबकि सेल्स एक जैसे हैं, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टीज या फिजिकल उसका बीइंग थोड़ा चेंज कर पाते हैं। तो मैम ने इसे एग्जाम्पल दिया यहाँ पर कि फ्लेमिंगो एक पक्षी होता है, वो अपने एक ग्रुप के साथ रहता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन जिस तरीके का वो खाना खाता है, उस तरीके का उसका भी कलर चेंज होता है। इसीलिए हम देखेंगे ट्यूमर सेल में अपने अपने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से वो अपनी अलग प्रॉपर्टी गेन करता है। तो एक ही ट्यूमर के सेल होंगे वो, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन वो किस जगह क्या काम कर रहे हैं, जैसे कोई कोई अपनी प्रोलिफरेशन के लिए जाता है, कोई कोई केवल ड्रग रेजिस्टेंस का काम करने के लिए है, कोई कोई सिविल मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ही काम कर रहा है। तो इस किस्म की अलग अलग कामों के लिए जो सेल्स है, ट्यूमर के सेल्स, ये काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इस किस्म के कैंसर्स पर या इस किस्म के ट्यूमर्स पर काम करना। तो इस बारे में अभी और आगे मैम बताएंगे इसमें। So cancer cells can adapt many different things, but if we are thinking about blood vessels and oxygen levels, then we want to talk about metabolism. So how cells consume nutrients and convert it into energy. And the area of science that studies how things adapt and survive is ecology. So we can borrow some concepts from ecology and apply it to cancer.
And in ecology, there are lots of variations that are temporal. We have weather fluctuations, we have drastic events, and they identify two main strategies which organisms can use. And first is called to develop a plastic phenotype, and plastic meaning that they can change depending on the cues they get from the environment. For example, trees, they look very different depending on the season. Whether it's winter or summer, you get different vegetation, how it looks differently. And another one is another strategy called risk spreading. Essentially, you don't want to put all eggs in one basket, that the population would produce offspring with different properties, such that in case something dramatic happens, then at least the population or a fraction of population will be able to survive. And this is a very common strategy that is used in economy. When you invest in markets, you don't want to put all your investment in one risky area. You want to diversify such that in case something doesn't work out, at least you will get some revenue back. So we want to ask whether cells use this risk spreading strategy, and whether they can invest in different metabolic pathways. So which nutrients they want to consume. And cell metabolism is very complex, but we can identify two pathways very simply. First one depends on oxygen. So cells use oxygen and convert it into adenosine triphosphide molecules. So this is essentially energy currency of a cell. If you have oxygen and a little bit of glucose, you will get 36 molecules out of it. But another way, when you don't have oxygen, you might only use glucose. It's less efficient. It only gives you 2 molecules of ATP, but you don't need oxygen. So you can have two options. And how do you choose between which option to use? Because sometimes it takes time to switch between the two, and sometimes you cannot go back. So it really depends on the cell. So how do you know which one is better? And we can write a set of equations, similarly as we did with foxes and bunnies. We can write a population for cells that can switch between relying on oxygen and not, and cells that do not switch. So they only choose one way of getting energy, and that's it. They cannot switch. And we can again analyze it and do some mathematical analysis on it, and then we can see which strategy would be the best in which areas of the tumor. For example, if you are near the blood vessel, you have lots of vessels around, and on average, you will have lots of oxygen all the time. So then you don't need to invest into some switching strategy, you just adapt to oxygen-rich environments. On the other hand, if you are far away from the vessels, you constantly experience starvation, so there is no oxygen, then you invest into using and relying on glucose only. So you again specialize in relying on glucose. However, in the regions where oxygen fluctuates between no oxygen and a lot of oxygen all the time or stochastically, then it is worth investing into risk spreading strategy and being able to switch between the two, switch between relying on oxygen and not relying. And we can show from our mathematics that this strategy comes also with the fact that population becomes very heterogeneous. There are cells with different properties, and they're very diverse. And this diversity has been linked to emergence of drug resistance. So then we can think, after making such prediction, we can how we can minimize the population in this area, how we can make them
being less heterogeneous, how we can be kind of to stop using this risk spreading strategy. And one way clinically would be to normalize the blood flow so that vascular vessels become more normal, that the flow is stable, and we no longer need to adapt to these irregular environments. But this is just a mathematical prediction. It is very far away from introducing into clinic, but there are similar concepts and similar equations can be used to, instead of modeling oxygen, we can model drug. And then you can actually use patient data. And I worked with a hospital in the US where they, when they design a treatment plan for a patient, they also have mathematicians in their team who use models to develop the most optimal plan of the treatment in order to try to prevent the emergence of drug resistance based on the similar concepts I have shown you here. I think we can translate here. So हम देखते हैं कि सेल्स जो है इन बेसिक ट्यूमर्स में या इस किस्म के एनवायरनमेंट में ये सरवाइव कैसे करते हैं। तो मैडम ने बताया कि दो मेथड्स है जिससे वो सरवाइव करते हैं। पहला तो हाईली प्लास्टिक फिनोटाइप, यानी उनका एक कैरेक्टर जो है जो प्लास्टिक फिनोटाइप है। प्लास्टिक से मतलब है वो अडेप्ट करता है अपनी एनवायरनमेंट के अनुसार। जैसे मैम ने एग्जांपल दिया था कि एक पेड़ है जो हर सीजन में अपनी उसकी लीव्स जो है वो अलग कलर की हो जाती, तो वो अडेप्टेबिलिटी है। एक तो वो है कि प्लास्टिक फिनोटाइप वाली, और दूसरी रिस्क स्प्रेडिंग है जिसमें वो सेल जो है ऐसे ऑफस्प्रिंग पैदा करे। ऑफस्प्रिंग यानी एक ऐसी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेल्स पैदा करे जो नई एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में सक्षम है ना। तो ये जो दो मेथड्स हैं, अब ये इन मेथड्स को लेकर हम कैसे हम आगे बढ़े बेसिकली, या इन मेथड को जान के, या सेल इस तरह सरवाइव करते हैं, इस इन दोनों कंडीशन को जान के हम आगे क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि पहले मेटाबॉलिज्म हम देखें। सेल मेटाबॉलिज्म जैसे आप जानते हैं, बायोलॉजी जो जानते हैं, वो एटीपी रिलीज होती है अपनी एनर्जी बेसिकली एटीपी के द्वारा वहां पे उसकी रिलीज होती है। और हम देखते हैं एक ग्लूकोज जो होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और देखते हैं दूसरा जो मेथड होता है बिना ऑक्सीजन के। तो जो ऑक्सीजन के थ्रू जो जिससे होता है उसमें 36 एटीपी रिलीज होती है, और बिना ग्लूकोज के हम देखते हैं, यानी जहाँ बिना ऑक्सीजन के हम जब देखते हैं तो वहाँ केवल 2 एटीपी रिलीज होती है। तो एक ही समझो एक पूरा ट्यूमर का, एक पूरा सेल का एक पुलिंदा है, वहां पे हम देखते हैं ये दोनों भी प्रोसेस शायद हो रही है। कोई कोई जगह पे ऑक्सीजन बेस पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, दूसरी जगह पे मे बी नॉन ऑक्सीजन बेस पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो इसको हम मैडम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और एक ट्यूमर की एक हम देखें, एक पूरी उसकी जो एक ट्रांसफर सेक्शन जैसा हम देखें कि ट्यूमर के एज से लेकर सेंटर तक का, हम एक टीएस देखें तो उसमें जो सतही तौर पर जहाँ ब्लड वेसल्स ज्यादा होती है, तो वहां पर सबसे ज्यादा वेसल्स होती है, जहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बेस्ड मेटाबॉलिज्म वहां होगा। बीच का जो पोर्शन है वहाँ मिले जुले, यानी वेसल्स भी है और बेसिक जो विदाउट ऑक्सीजन वाला सेक्शन है वो भी है। और जो सेंटर की तरफ ट्यूमर की तरफ हम जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि वहां टोटली हम ग्लाइकोलिटिक यानी ग्लूकोज बेस पे ही हम सेटअप सेल मेटाबॉलिज्म हम पाते हैं। तो जब हम एड्रेस करेंगे इन चीजों को, जब हम इसको स्टॉप करने की हम कोशिश करेंगे, तो हमको ये 3 लेवल्स जो है हमको देखनी होगी कि वैस्कुलरी लेवल कहाँ जाता है, कहाँ पे दोनों का मिला जुला है, और कहाँ पे टोटली बिल्कुल वेसल नहीं है
तो वहां पे हम देख सकते हैं कि हम ग्लाइकोलाइटिक मेथड का हम आगे जा सकते हैं उससे। तो जैसे मैम ने कहा कि वहाँ पे अलग अलग जैसे स्ट्रेटेजीज हम अपना सकते हैं। जैसे मैम बता रही थी वो किसी अमेरिका में जब थी, तो वो हॉस्पिटल में जो पेशेंट डेटा है उसके हिसाब से इस पर काम करने की उन्होंने शुरुआत की थी। और ये मॉडल्स जो है ये डेवलप इसी तरह होंगे जब हमारे पास प्रॉपर ट्रेंड या प्रॉपर डेटा जब हमारे पास आता है, उसके बेस पे हम जब जानते हैं कि कौन से मॉडल्स कहाँ पर, कौन सी स्ट्रेटेजी कहाँ पर हम लगा सकते हैं इसमें। Okay. So in this model, we made a very big simplifying assumption that we did not consider physical space and movement between the cells. But it is probably very important because if you look at the motion of cells or some biological systems, they do not stay in one place. They're very active because when they consume their nutrients, they extract energy from the environment and they convert it into mechanical work. So they move. And in this individual movement of each cell results in a very interesting collective behavior and phenomenon. As you can see here on the left, you're looking at bacteria moving collectively and create these very interesting patterns. And on the right, these are cells. So as I mentioned, the cell lines that were plated on a petri dish, and they move a lot. So if you think about previous example of tumors, they're probably also adapting their movement, but we cannot incorporate every single detail into one model because otherwise we don't know what's happening. There are too many unknowns. But we can study cell movement separately. It is important also to note that cells not only move as a whole cell inside of the cell, there are also movement going on. So this is an image or movie of a cell. This black circle is nucleus of a cell, and the green is cytoskeleton. It consists of filaments that can move, and if you extract these filaments and put it on some plate and look at their motion, you'll see they're highly motile. They create these patterns that dynamic, that they're constantly moving. So it's a very interesting problem to study, and also important problem to study because cell movement it is important at different stages of a human or non-human body. For example, when we grow from embryo to baby, we need to form all the body parts and organs, and motility plays a key role in whether we develop properly as we should, or there are some deformations. So it is a very intricate process of development of tissue. Another example would be wound healing. When you get a cut on your skin, you know that it will close at some point. And this wouldn't be possible without cells being able to move and actually close the wound. I mentioned before, cancer cells can invade other organs, and this is because cells can move, they can enter bloodstream, and then they can again enter another organ and then colonize it. And of course, any experiments you do, you also encounter cell movement. And how do we approach this problem? There are several ways, but I will encourage you to look at cells as elongated rods. You can see here the first picture is a colony of bacteria. They are elongated, they form these structures, so they align or they misalign with each other. They move along their longest axis, so they move either backwards or forwards. Then you have pictures of different types of cells from our bodies. You have stem cells, you can have fibroblasts, they're elongated cells.
And epithelial cells, so cells on our skin that make up our skin, epithelial cells are a bit rounder, but you can still define the major axis, so the axis of elongation, and make analogy with elongated rods, and in particular with liquid crystals. So liquid crystals, it is an intermediate phase between liquid and crystal. So it consists of elongated particles that under certain conditions, for example, electromagnetic field, they align in a similar direction. They have orientational order, so they all point in the same direction, but they don't have positional order like a crystal, so they can be arranged quite randomly in space. And the probably most familiar example would be liquid crystal displays, where this technology is used to so for every pixel you would have a liquid crystal which would align and block light so you get the proper colors out. Yes, and we can then make a similarity between liquid crystals and biological tissue just by looking at their shapes. But there are still differences. Biological cells are, as I said, active. They move. And we can incorporate this into the equations because physicists developed a set of equations and models to understand the liquid crystals. And we can add this active term into the equations and achieve an active liquid crystal, which would describe different biological movement of different biological systems. And this active liquid crystals, when you look at them in 2D, they create very interesting patterns and motions that resemble very much the movies I showed you of bacteria and cells. And one of the key features that these active liquid crystals have is the formation of topological defects. Essentially, you need to look, in order to identify a defect, you need to look at this, how the cells are oriented and spot singularities in the orientation. So you can see here, all particles point, and then you have the kind of in the middle singularity. And there are different types of topological defects depending on the geometry, whether it's a surface or it's just a confined square. But you can also find topological defects in real life on your fingerprints. This is an example of two topological defects. You would have a comet-like defect and trefoil-like defect. Also on top of your head, where your hairline is, we also have topological defects. And topological defects can be encountered not only in biology, but in physics, in semiconductors, and in cosmology. When the universe expanded, there were topological defects that would lead to later densification and formation of galaxies. And we quite a big study community tries to understand what is the role of these topological defects in biological tissue. I think we can translate here. So अब इसके पहले जब हमने देखा कि वेसल्स को लेकर जब तीन तरह के स्ट्रेटेजीज हम लगा पाते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म है वहाँ, जहाँ पे मिला जुला है वहाँ, जहाँ ग्लाइकोलिटिक है वहाँ, लेकिन उसके साथ ही सेल्स जो है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो, तो तब क्या होगा, तब हम क्या कर पाएंगे, है ना। ये तो ट्यूमर अपने भीतर की हमने देख ली उसकी मेटाबॉलिज्म, लेकिन जैसे सेल जो है ट्यूमर के ऊपर के सेल या अंदर के सेल, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, तो उस फिजिकल स्पेस का क्या। तो फिर मैम ने हमको बताया कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है ये एक, वो अपनी अपनी लेवल पे ही एक्टिव होते हैं, वो ठीक है, वो अपना कैरेक्टर रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो अपनी लेवल पे एक्टिव होते हैं। हमने जैसे बैक्टीरियल स्वार्म बताया, सेलुलर टिश्यू बताया, उसके उनका पैटर्न बताया, वो किस तरह से वो एक फ्लूइड में टर्बुलेंस की एक शक्ल का वहां पर आपको दिखता है। और
सेलुलर टिश्यू में जहाँ एपिथेलियल सेल कल्चर में आपको टर्बुलेंट डायनेमिक्स मैम ने दिखाया। तो ये तो हुई एक सेल्स की बात की, या बैक्टीरिया जो है या टिश्यूज जो है वो इस किस्म से आपको दिख रहे हैं कि मूव हो रहे हैं या आप एक इंटरेक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा सेल के भीतर भी, सेल के अंदर भी आप मैम ने बताया कि वहां पर भी चेंजेस हो रहे हैं। तो साइटोस्केलेटन लेवल पर वो भी मैम ने बताया कि वहां पर भी चेंजेस हो रहे होते हैं, वहां पर भी एक्टिविटी हो रही होती। तो इसको हम कैसे एड्रेस करें, है ना। तो इसके जैसे एग्जाम्पल बताया मैम ने, जैसे हमारी जो फेफड़े होते हैं उसमें मॉर्फोजेनेसिस होता है। तो क्योंकि ये स्पेस है, स्पेस में इंटरेक्शन की गुंजाइश ये बहुत है। कोई आपको जख्म हो जाती है तो जख्म भी सेल्स जो इंटरेक्ट करते हैं स्किन के या उस जख्म की उस टिश्यू के साथ में, तो वो हील भी होने के लिए वो कारगर होते हैं। ऐसे ही जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं ऐसे स्पेशल फिजिकल स्पेस के साथ जहां पर वो मेटास्टेटिक लेवल पर जाते हैं, वो अलग लेवल पर वो जाने की उनकी कैपेसिटी होती है। तो इसको हम कैसे एड्रेस करें। अब एक एनालॉजी 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 बिल्ड की है बायोलॉजिकल टिश्यू और लिक्विड क्रिस्टल्स में। आपने लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में जाना ही होगा। हम जो एलसीडी टीवी वगैरह देखते हैं उसको एक मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर हम देखें तो वो एक प्रॉपर आपको एक विजुअल आपको वो देता है। तो ऐसे ही हम देखें कि जब बैक्टीरिया है, स्टेम सेल्स है, इनकी अपनी एक हम देखते हैं कि अ, इनका अपना एक शेप होता है, या इनका एक अपना एक पैटर्न होता है। तो हम मैडम ने ये बोला है कि इनको हम देखें कि अगर ये किसी भी तरह की जैसे हम एलसीडी या लिक्विड क्रिस्टल्स के साथ में इसको हम कंपेयर करें तो ये उस जैसा ही लगभग आपको प्रतीत होगा। यानी कि जैसे लिक्विड क्रिस्टल्स को आप देखते हैं कि जब उस पर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है तो वो एक सेम डायरेक्शन में आप उसको लिक्विड क्रिस्टल्स को आप देख पाते हैं कि एक सेम डायरेक्शनल उसका एक फ्रेमवर्क या पैटर्न होता है। तो इसी तरह मैम बोल रही है कि जरूर बायोलॉजिकल टिश्यू और लिक्विड क्रिस्टल्स में ये हम सिमिलैरिटी देख पाते हैं कि जब भी किसी का इन्फ्लुएंस होगा तो वह एक पैटर्न या एक किस्म की डायरेक्शनल अपनी एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल टिश्यू अपने आप में भी एक्टिव होते हैं, अपने आप में भी एक्टिव होते हैं वो, जबकि लिक्विड क्रिस्टल्स ये एक्टिव खुद में नहीं होते, उनको एक्टिवेट करना होता है। तो इसमें ही मैम आगे बताते कि बायोलॉजिकल टिश्यू सॉरी लिक्विड क्रिस्टल्स को हम अगर एक्टिवेट करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि इतने किस्म के जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसे पैटर्न्स आप देख सकते हैं। और इस पैटर्न्स जब एक्टिवेट करते हैं हम तो जैसे बैक्टीरियल स्पैज्म सॉरी बैक्टीरियल बैक्टीरियल जो स्पार्म्स थे या सेल टिश्यूज थे आपने देखे, तो उसके जैसे आपको पैटर्न यहाँ पे आप देख पाएंगे। अब होता क्या है, मैम ने और एक लेवल के ये आगे ले गई है टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स के बारे में। यानी एक ऐसी पैटर्न्स जो स्पेसिफिक डायरेक्शनल आपको एक उनका मूव बताती है। तो ये टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स जो है हम देखते हैं कि जब भी इस किस्म का उनका मूवमेंट है या उनका एक पैटर्न है, उस पैटर्न में आपको घूमते दिखते हैं। तो क्या टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स जो है आपके रोजमर्रा के जीवन में आप देख पाते हैं। जैसे मैम ने एक एग्जांपल बताया कि आपके सर के ऊपर जो भंवर होती है वो एक टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स का एग्जाम्पल है। ऐसे ही आपकी जो फिंगर प्रिंट्स है जो बहुत सालों तक लगभग एक जैसे ही होती है, वो एक आपका टोपोलॉजिकल डिफेक्ट होता है। तो ये जो पैटर्न्स है इनका और बायोलॉजिकल टिश्यू या फिर जो जिसको हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स को जो हम एक्टिवेट करते हैं उस
उसको लेकर के ये टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स किस तरह से असर कर सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। यस मैम। Yes, so we can study these topological defects and see how they influence biological function. And I'll give you one example using study of bacteria. So bacteria are tiny, tiny organisms. They are all around us. They're also inside us and maintain our gut health. But often bacteria are linked to diseases and infections. They can cause severe problems for humans. And these populations, they exist in like mixed populations, and they compete. They same as cells in cancer, they have different properties, and they can fight with each other. They have different mechanisms and weapons. And one of the key characteristics is they have also different ways of moving. And our colleagues in Sheffield University, they study one specific type of bacteria called Pseudomonas aeruginosa. These are infectious, often resistant to antibiotic bacteria. And they can modify this bacteria. For example, this specific type of bacteria, they have pili. So you can see the kind of legs that they can use to crawl around. So the classic one would have certain amount of pili, but they can engineer the ones with double the amount of pili. And the more pili they have, the faster they move. So they can see how then the two different, same bacteria but different strains, which differ only in their ability and their speed at which they move, how do they compete with each other? Is there any benefit in having more pili or not? And they do several types of experiments, and this is first type of experiment where they just put the bacteria in channels and let them spread and see who wins the race. And we can see the movie, you can see their top and bottom channels, and we have a clear winner. One is definitely faster, and you would think, probably, maybe not, that the winner is the faster one with the more pili. But I will want you to remember this story about a tortoise and a hare, where they were competing in a race, and the winner was a tortoise. And this is the same story in bacteria. Slower bacteria, even though they start in the beginning slower, they win the race. And even though the faster ones, they can move twice as fast, they do not win. And we can use modeling in order to understand why this is happening, why having more pili or more legs doesn't give you an advantage in such a competition. And I think it's best demonstrated in this set of experiments where they mixed the two types of bacteria. So here you have fast and slow together, but in pink you will only see the faster one. So they can experimenters have ways to mark the bacteria with different colors and distinguish the two types. And if you look at the movie, you can see the pink ones, the fast ones, they move, but a lot of them get stuck in the beginning. They form these structures, like this, very dense structures, and essentially they get stuck there. And you can see these structures resemble topological defects. So these are called rosette topological defects. And we can actually quantify it and prove that these are the topological defects, and that essentially faster bacteria, they move so fast that they get trapped by the structures that they create themselves, and this prohibits them from winning the race, and this does not occur to a slower bacteria. And additionally, if you mix these bacteria and let them move together, you can also see that topological defects not only can trap them, but they can separate the two. So if you just plate this bacteria randomly of different types,
For example, you can see here WW case. They're all mixed, but because they have difference in activities, topological defects will kind of unmix them, and we'll have a groups of only fast ones that are clumped together and groups of only slow ones clumped together. And we can do modeling trying to understand why this is happening. And this is just to show you the output of the model. The equations are a bit complicated to put them out, but essentially what we are working is that we can model the concentration of more active bacteria and more slower bacteria. So pink are more active, green are more slower. And we can write equations governing the dynamics of this concentration and also the orientation. So we can actually track where the defects are forming using equations. And we can see that by red dots here, we denote this topological defect, the comet-like. And we can see it essentially captures the more active population and carries it with it. And we can then explain the physics behind this separation that is driven by topological defects. And this is just one system where topological defects play a role, but there are many more studies where scientists have shown that topological defects actually appear in a series of other biological systems. For example, when you have a monolayer of cell on a petri dish, you can observe extrusion of a single cell, so they kind of push out their neighbor upwards. And this is driven by or coincides with the location of topological defects, because this is where you have most compression occurring. So topological defects essentially are compressive hotspots. And this is what drives then the extrusion events. And I think my favorite example would be a limb formation in a different animal. So this is animal called Hydra. It's a very simple animal. And essentially it starts as an elongated body, and then where you have topological defects in the orientation of cells in this animal, you will know that this will be where the limb will be forming. So whether it's arm or a leg of this animal. So it determines and creates, and is important during the development. And I have shown you a set of different mathematical models, and they're mathematical, they're physical, they're on different scale, whether it's modeling population or modeling cells. And we can also model cells as individual deformable particles that interact with each other. You can think of squishy balls type of models in order to understand the physics and answer questions why this is happening. And once we know why, we will have better idea on how to prevent something or how to treat something. And I want to finish by this quote by George Box, which is a very famous quote that all models are wrong, but some are useful. And this is perfect explanation of mathematical modeling. You will never develop a perfect model, but you can develop a useful one. And I also want to stress that no matter which career you choose, the methods are often transferable, and it will not bound you to pursue a career in a specific spot. If you develop new passion along the way, you'll be able to apply your skills to a different problem. And I hope you will have some inspiration with this type of work I showed you in this. Thank you. तो आखिरी सेक्शन में हम आते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जहाँ जैसे हमने देखा कि टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स के बारे में मैम जाती है, और फिर एक बेसिकली हम एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले हम शुरू करते हैं। जैसे बैक्टीरिया का मैडम ने एग्जाम्पल लिया कि बैक्टीरिया जो है हम देखते हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन में सबसे ज्यादा उसका हम यानी प्रेजेंस पाते हैं। हमारी बॉडी में, खुद की बॉडी में 40 ट्रिलियन के आसपास बैक्टीरिया होते हैं।
और बैक्टीरिया का आपको पता है वो अच्छे बुरे जो भी है डिजीज कॉजिंग होते हैं। और पूरी दुनिया में प्लांट्स और एनिमल से भी ज्यादा किस्म के बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया का और एक वो है कि वो खुद की मोशन अपनी तरीके से जनरेट करते हैं। तो अपनी खुद ही जो बोलते हैं ना, एक एवोल्यूशन की अपनी ही उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजी डेवलप की है। अब मैडम उसमें ही देखते हैं कि चेक रिपब्लिक के एक उनके कलीग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। और सूडोमोना जो बैक्टीरिया है, जो थोड़ा इंफेक्शियस है, उस पर एक बेसिक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और ये देखा है उन उसी सूडोमोना में एक अम, उसके लिम्स या उसको हम बोलते हैं पायलट, जिसको हम बोलते हैं पैर जो उनके हैं, वो बढ़ा के या उन उस पर हमने एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। तो आप देख सकते हैं मैम ने पहले स्लाइड में बताया कि अम, कम कम पैरों वाला और ज्यादा पैरों वाला बैक्टीरिया उन्होंने वहां पर बनाए। और उनमें अब क्या किया है, उनमें रेस लगा दी। और उनमें रेस लगा दी तो आप जनरली है कि जिसको ज्यादा पैर है वो फास्ट दौड़ेगा, और जिसको कम पैर है वो स्लो दौड़ेगा। यही होता है ना। तो लेकिन जब मैम ने वो वीडियो बताया हमको, वहां से हमको उन्होंने बताया कि टॉर्टोइज और कछुए की कहानी से कैसे रिलेट करता है। और देखा गया कि जो जरूरी नहीं, जो ज्यादा पैर वाला जो सुडोमोना था वो जीत पाए। छोटे कम पैरों वाले सुडोमोनास आगे निकल गए और ज्यादा पैर वाला पीछे रह गया। तो ये क्यों देखा गया, ये ऐसा क्यों देखा गया? तो वो इसलिए देख सबसे पहले मैम ने बताया कि जो फास्ट बैक्टीरिया होता है, जिसको ज्यादा लिम्स है, पैलेट्स है, उस वो एक जिसको वो एक टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स में अ, आगे बढ़ते हैं। और उस टोपोलॉजिकल डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, वो ट्रैप हो जाते हैं अपने ही स्ट्रक्चर में। और उस वजह से क्या हो जाता है, वो उस स्पीड से जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं वो स्पीड को वो ओवरकम नहीं कर पाते, और छोटे जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। अब वो इस एक्सपेरिमेंट में नेक्स्ट लेवल जो था, टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स को ही ध्यान में रखते हुए उन दोनों बैक्टीरिया को, ज्यादा पायलट वाले और कम पायलट वालों को अगर मिक्स कर दिया, तो हमने देखा कि ये जो टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स है, ये ना ना सिर्फ उनको ट्रैप करते हैं, बल्कि उनको सेपरेशन भी करके दिखाते हैं। मतलब काफी हद तक वो सेपरेट भी कर सकते हैं। तो टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स का ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके देखा था, जिससे इनकी जो बैक्टीरिया की जो फैलाव है उस पर एक किस्म की रोकथाम लगे, और इनका सेपरेशन हो। मतलब सेपरेशन होना का मतलब वो है कि इनके हम बाद में इनको आप टोटली आप कर्व कर सकते हैं। तो मैडम ने मॉडल की तरफ इसको आगे ले जाते हुए बताया कि इसको हम किस तरह मॉडल की तरफ पे डेवलप कर सकते हैं। मैडम ने एग्जांपल दिया, अब उसके डेप्थ में हम उतना नहीं जा सकते, लेकिन दो स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया एक टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स के माध्यम से हम सेपरेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। और इसी राह में देखिए कि टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स जो है वो अपनी लेवल पे कितने कारगर होते हैं अलग अलग लेवल पर। और टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स जो है वो अलग अलग बायोलॉजिकल फंक्शन को भी कारगर बनाते हैं। और वो सेपरेशन के अलावा बहुत सारी चीजें भी करते हैं। ये आपको मैम ने स्लाइड में भी बताया। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैम बोलते हैं कि इस इसी ये मॉडलिंग जो है ये जरूर इसका मतलब बोलते हैं कि ऑल मॉडल्स आर रॉन्ग बट सम आर यूजफुल। इस कोट के साथ मैडम खत्म कर दिया। इसका मतलब है कि हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। यानी अगर कोई मॉडल खत्म कम भी हो गया या कम पड़ गया, उसका मतलब ये नहीं कि यह यूजफुल नहीं है। ये आगे की मॉडलिंग के लिए जरूर काम आता है। तो ये एक बेसिक सा
एक माध्यम था जिसमें टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स की जो टेक्निक है या जो उसका माध्यम है, उस माध्यम में कितना ये कारगर मॉडल डेवलप हो सकता है, उस बारे में मैडम ने बताया. सो यस, वी आर रेडी. I mean, we are actually short of time, but if there are any questions from our viewers, students, so please put in the message box, or you can ask, you can raise your hand and we can unmute you. Okay, there is a question from Kajal. How does how did bacteria pili get? Because bacteria is very small, we can't see naked eyes. I mean, how did they develop bacterial pili? She's asking. So these are intrinsic. So they, pili means like small legs. So it's just part of their bodies. But you can genetically modify them to kind of alter their genome to have them more of them. So instead of 5, for example, to have 10. And they do not see, but they also have they have some sensors, like they can sense chemical gradients and so on. So even though they don't have vision, they have ability to navigate in their environment. And this is a whole another area of research. How would they navigate? But legs is just their part of their body. Any questions from YouTube? Because our viewers are also watching us live on YouTube. Not so far. Yeah. Aleksandra, I have a question. You said that there's structures in cells and in tissues that resemble liquid crystals, and in in a lab we can manipulate liquid crystals, and in a TV manipulate liquid crystals to do different things, show images. Does this imply the possibility that we can also mechanically manipulate tissues some way? And if so, what are the applications of that? Yes. So one example I can give is we have worked with with microtubules. So these are subcellular filaments similar to the ones I showed, that something that is inside the cell. And we can extract those and look at their motion. And they can be manipulated by light. Light can affect their activity. So we can shine light and then only portions of cells would be affected. So we could navigate them and so on. Similarly, we can change the substrate there in the lab, they exist. We can also change their physical properties of substrates and they will affect the behavior. And applications for that would be biomedical engineering, so developing novel materials, some active materials, and perhaps or growing new organs and shaping new organs. Thank you. That's very interesting. But is there any possibility to do this in vivo, not in a lab, like inside a human body? Not at the moment, no. Okay. Yeah. You could think of perhaps some light or some radiation linked, but I think it's beyond anything we can do right now in the labs. Any more questions? Students? Students on Zoom, students on YouTube. You can write down your questions or raise your hands. We will allow you to ask. Both. Okay, we have one more question from Kajal. Which kind of model we can take
in biological experiments, can we take random organism or it has some specific organism? So when you work with biological organisms or animals, you have also, first of all, to consider ethics. When you want to, you can work essentially on anything you want, but it needs to be in an ethical way that you don't abuse animals or so on. For more cellular level, so looking at microorganisms, usually you kind of have standardized systems you work with because they are studied. We know a lot about their mechanical or other properties. So you would just keep using the system, like a specific cancer cell line or a specific type of bacteria, but you can modify them genetically. There are ways experimentally to do this, and then you can test your hypothesis by changing them, their properties. Anyone else? Anyone else? If because we already have lost the time, and anything from YouTube, Dada? Not so far. No. Okay. So maybe to conclude, Alexandra, maybe you could tell us what you think the big open questions are in your field and what you might be working on next in your career. I think biggest open question or its biggest step is to make models as close to realistic biological conditions as you can, because as I mentioned, biological systems are very complicated. There are lots of feedback loops between different systems that are very hard to study. And in my future research, I want to develop models that close this gap, that we can get a step closer to kind of modeling animal, more in vivo scenarios, so more animal-like systems or systems like human body with the computational models. And hopefully I'll be working on this in the future. Okay, I think we'll conclude it here. Thank you, Dr. Alexandra, for delivering such an insightful talk on the intersection of biology and mathematical models. You give a lot of examples which became easy for us to understand these concepts which are generally appears very complex. I would also like to thank Dr. Subodh for being here with us and for spearheading this Curiosity lecture series. And thanks to my colleague Subodh for skillfully translating the lecture into Hindi, making it accessible to our wider audience. And last but not the least, all the students who have joined us on Zoom and on YouTube. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you, Alexandra. Thank you, Alexandra. Thank you, Subodh. Thank you, everyone. And bye until we meet for the next Curiosity lecture. Yes. Bye, everyone. Yep. Bye. Thank you, Alexandra, ma'am. Good, Subodh.